I'm your host Ilyas Bulbulia, and I'll be with you for the next hour. As our regular viewers are aware, on Just Law, we normally discuss an area of law which is of interest to our viewers. And secondly, and more importantly, Just Law is a live show. So whatever questions you've got, it's a live show. You can call the number that appears at the bottom of your screen and we can have a discussion in relation to any questions that you have. In our experience, we are normally able to deal with most aspects of English law. So whether your question relates to immigration matters, family matters, criminal matters, whatever it is, whatever questions that you've got on the law, please do pick up your phone and give us a ring on the number that appears at the bottom of your screen, and hopefully I should be able to give you some guidance in relation to that. Just a couple of matters as always before we get going. Obviously it's a live show, we're not able to take very detailed instructions from you live on air. So if it's the case that either I need to speak to you off air or I need to look at your documents before I can advise you, then you'll be able to contact me after the show and we can have a discussion about your query then. But in most cases, in my experience, I should be able to give you quite firm advice live on air based on the information that you provide to me. Now, as always, we normally pick a subject and we normally go through that. And over the last few weeks, we've looked at a number of different areas, ranging from someone making a spouse application to come to the United Kingdom, looking at how once they're in the UK, how you extend your visa, how you apply for indefinite leave, how you apply for nationality, etc. So we've looked at many of those topics over the last few weeks. What I want to do today is to look at another very topical, very important subject, which is the position where people get married within the United Kingdom, and in particular where people get married to someone with not a British passport but a European passport, and want to look at what their rights are under European law to continue living in the United Kingdom. Now, in my experience, even if I go back, say 5-10 years ago when I was practicing immigration law then, as I am now, certainly even if you go back 10 years, there were very few cases on European law as such. Most lawyers would deal with maybe a case a month, maybe a few cases a year, and that's it. You didn't have many cases in the way that you do now. And to be quite honest, most busy immigration lawyers will be submitting these applications a couple of weeks at the moment, as opposed to a few a year, which was the case many years ago. And that's obviously because of what's happened over the last 10 years. More and more people from European countries are moving in to the United Kingdom. Naturally, they're marrying people in the United Kingdom, and therefore the issue about what happens to people's visas if they're here on some temporary visa, or they're here and they've overstayed, what happens to them when they marry a European national, and that's become increasingly important. So that's really sort of the background to the topic we'll be discussing today. But as always, although we're talking about European cases, and in particular people who get married to Europeans in the United Kingdom, whatever your questions relate to, do give us a ring on the number that appears at the bottom of the screen, and we'll have a discussion in relation to that as well. Now, I've set the sort of background to how and why there are so many European applications now, obviously based on the number of Europeans coming to the United Kingdom and then naturally marrying people here. Before we go into that in detail, let's take our calls first. Hello, Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम जी, thank you for calling. जी, question क्या है? जी, मैं पूछ रही थी कि मुझे इंग्लैंड में आए हुए 9 साल हुए थे। हुए जब मैं इधर आई थी तो उस वक्त था कि वो मुझे लाइसेंस रिव्यू टेस्ट वो मुझे पास नहीं करना पड़ा था। उस लॉ से पहले मैं आई थी। फिर मुझे मेरी स्टे इधर हो गई है, पर अब मुझे मैं ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना चाहती हूँ। मुझे क्या करना होगा? तो आपको पहले ये देखना पड़ता है कि आपका जो स्टे हुआ था वो कब हुआ था, स्टे, इंडेफिनिट स्टे? वो 2013 में हुआ था। 2013 में हुआ था। तो जब आपका स्टे हुआ था 2013 में, तो वो एट दैट टाइम आपने लाइफ इन द यूके टेस्ट किया था? उस वक्त मैं
मैं कॉलेज जाती थी, मैंने जस्ट लेवल ए किया था पास, उससे हो गई थी मुझे। I think जो लॉ है ना रफली 2013 में ही चेंज हुआ था। आई थिंक वाज अबाउट नवंबर 2013। इसके बाद सबको लाइफ इन द यूके टेस्ट करना था और इसके बाद सबको वो B1 सर्टिफिकेट भी करनी पड़ती थी। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल लाइफ इन द यूके टेस्ट पास करना पड़ेगा आपको, एंड सेकेंडली B1 सर्टिफिकेट इंग्लिश स्पोकन एंड लिसनिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग में वो भी आपको पास करना पड़ेगा। दोनों करना पड़ेगा आपको, लाइफ इन द यूके टेस्ट एंड द B1 सर्टिफिकेट इन स्पीकिंग एंड लिसनिंग। जो B1 की जो टेस्ट है ना वो आप इंटरनेट से बुक कर सकते हैं विद ट्रिनिटी कॉलेज। लाइफ इन द यूके टेस्ट वो किधर से पास कर वो भी फिर जी वो उसके सेपरेट है, लाइफ इन द यूके का भी सेपरेट है, गवर्नमेंट की वेबसाइट है। सो अगर आप इंटरनेट पे देखेंगे लाइफ इन द यूके टेस्ट होम ऑफिस वेबसाइट, तो वो गवर्नमेंट की वेबसाइट पे आपको आप बुक कर सकेंगे। वो एक ही रास्ता है, वो बेस्ट सबसे इजी रास्ता यही है कि आप इंटरनेट से उसको बुक कर लें, मगर मेक श्योर कि आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पे वो जाए। इस पर लिखा होगा कि ये ऑफिशियल वेबसाइट है लाइफ इन द यूके टेस्ट बुक करने के लिए। रफली उसकी फ़ीस होती है आई थिंक अबाउट £60 £65 ऐसा कुछ है, आई कांट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट रफली इतनी फ़ीस है। B1 सर्टिफिकेट जो है उसकी फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा है, रफली अबाउट £150 इसकी फ़ीस है, मगर वो दोनों करना पड़ेगा आपको। तो ये लाइफ इन द यूके टेस्ट के कितना कॉस्ट, सॉरी ये ब्रिटिश पासपोर्ट का क्या कॉस्ट है? आप जब नेशनैलिटी के लिए अप्लाई करेंगे ना, नेशनैलिटी की फ़ीस है अबाउट £1300, अबाउट £1300। तो फिर आपको नेशनैलिटी सर्टिफिकेट मिलेगी और वो नेशनैलिटी सर्टिफिकेट के साथ आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो पासपोर्ट की कॉस्ट जो नॉर्मल पासपोर्ट की कॉस्ट है रफली अबाउट £70 है, मगर पहले आपको नेशनैलिटी की सर्टिफिकेट लेनी पड़ेगी। और हम जो बात करते हैं ना लाइफ इन द यूके टेस्ट, यू गोइंग टू हैव टू डू द B1 टेस्ट, यू गोइंग टू हैव टू डू £1300 की जो फ़ी पे करके अप्लाई करेंगे, तो आप यू विल गेट द नेशनैलिटी सर्टिफिकेट एज अ रिजल्ट ऑफ दैट। ठीक है ना? ओके, अच्छा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल। We'll take next call. Take a next call. Call drop. So sorry you've had to hold on for a while, but please do call back and we'll try and assist you the best way we can. So just going back to this subject about people who marry European national in the United Kingdom, and how in most cases, not all cases, the person that they're marrying may well have overstayed in the United Kingdom. So how do they regularize their stay in the United Kingdom? Now, there are really two categories of applications that you have, and each category has its own rules. The first category, and to some extent the easier category as far as European applications are concerned, is the category where both parties are legally married in the United Kingdom. So where the European national and the person living in the UK, who's not a British citizen, if they're married in the United Kingdom, the application process is much easier. So that's the first category, which we'll look at in detail in a few minutes. The second category is where the person in the United Kingdom is in a relationship with somebody from one of the European countries, but they are not married. Now, with that category, it's more difficult. It's more difficult for a number of reasons. First of all, if you fall into that category where you are simply in a committed relationship, it may well be that you've had an Islamic marriage in the United Kingdom and you're living together as a married couple, but you have not registered your marriage at a registry office. So you fall into the category of being unmarried. And that is a more difficult category as far as European applications are concerned. More difficult for two reasons. First of all, where somebody is married, they don't need to show how long they have been living together. They could be married for a week, for a month, for a year, and then the person in the UK could make an application to stay here based on that marriage. Whereas somebody who is not married to a European national, but in a relationship, let's say they've had an Islamic marriage, they are in a relationship, they need to be, according to the Home Office, and this is subject to a challenge, they need to be in a committed relationship
for 2 years. And that obviously causes a problem straight away. Somebody has an Islamic marriage, they're living together, maybe they've had a child, but the problem is if you can't demonstrate that you've been living together for 2 years, the Home Office will most likely reject the application. Because the rule that the Home Office applies is that the parties need to be in a durable relationship. This is an important topic and I'll deal with that in more detail after I've taken the next call. Hello, Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग। जी, आपका क्वेश्चन क्या? मैंने एक क्वेश्चन पूछना था। जी, फॉर्म फिलअप किए हैं तो वो थोड़ी मिस्टेक हो गई है। जी ठीक है। तो थोड़ा वो पुलिस केस था तो वो मुझे नहीं था पता कि वो पुलिस का कोई ऐसा मसला बना हुआ है। जी ठीक है, ठीक तो है। वो मुझे 3 साल भी हो गए हैं, तो अभी क्या मैं दोबारा एप्लीकेशन सबमिट कर सकती हूँ? ओके, सो आपका अभी सिचुएशन क्या है? आप ओवरस्टे है, क्या है अभी आप? नहीं, ब्रिटिश के लिए अप्लाई। ओ, ब्रिटिश के लिए, जी जी समझ गया जी। ऑलराइट, ओके, सो ब्रिटिश के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो इसमें हमको ये देखना है कि जो क्रिमिनल ऑफेंस है ना, वो उसमें जो सेंटेंस थी वो क्या था? कोई प्रिजन सेंटेंस या कोई फाइन या कम्युनिटी सर्विस क्या था? नहीं, कुछ भी नहीं था। नॉन, वो क्या कहते हैं, कुछ नहीं हुआ था? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ था। बस ये था कि मैंने उन लोगों को जब एप्लीकेशन सबमिट की है ना, तो वो मैंने यस नहीं किया ना, टिक मार नहीं किया, जिसकी वजह से वो मुझे उन लोगों ने रिफ्यूजल भेजा है। ऑलराइट, ओके, सॉरी। सो ये जो यस की बात करते हैं वो क्वेश्चन क्या था इसमें जिसमें आपने रॉन्ग आंसर दिया? वो क्या क्वेश्चन था? वो यही पूछ रहे थे कि कोई ऐसा पुलिस केस या ये है। समझ गया तो जी। पता ये फैमिली मैटर था थोड़ा ना, हस्बैंड एंड वाइफ में। तो ऑलराइट, ओके, सो वो ये कहते हैं कि आपने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दिया उसको। जी, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। सो उसने लेटर में ये लिखा है कि आपने कोई डिसेप्शन किया, ऐसा लिखा है? जी, कह रहे हैं कि ऐसे कह रहे आपने हैं। बताया नहीं। असल में जी समझ गया। असल में प्रॉब्लम क्या है कि जब वो ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि आपने कोई डिसेप्शन किया, फॉल्स इन्फॉर्मेशन हमको दिया, तो वो 10 इयर्स का बैन लगा देते हैं इवन नेशनलिटी पे। ये प्रॉब्लम है इसमें। सो अगर इवन दो इसमें कोई सीरियस बात नहीं थी, अगर आपको पता ही नहीं था कि उस पर आपको कैसे उसको रिप्लाई करना, बाय मिस्टेक आपने रॉन्ग लिख दिया है, मगर वो कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, कुछ भी नहीं जी, बस टिक मार गलत हुई है। घर में एप्लीकेशन सबमिट की है, घर में लिखा है सारा कुछ, तो मुझे नहीं था पता कि वकील के थ्रू जाना चाहिए। जी, क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, नथिंग। तो आप वो जो कहते हैं ना कि आपने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दिया, तो वो क्या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आपने दिया? वो क्या है वो जो वो कहते हैं वो रॉन्ग है? वो ये कह रहे हैं कि आपने बताया नहीं कि ये हैपेंड हुई है। मतलब मुझे खुद नहीं था पता, क्योंकि 3 साल 4 गुजर गए, मुझे नहीं था इस चीज़ का पता। ठीक है, ऑलराइट, ओके। ना इसमें रियली तो सिचुएशन ये है कि वो 10 इयर्स के लिए नेशनलिटी नहीं देंगे, मगर आप अगर उसको चैलेंज करना चाहते हैं कि लोग ये तो सिर्फ एक मिस्टेक थी, इसमें कोई डिसऑनेस्टी नहीं थी ना, क्योंकि उसको ये बताना है कि ये जो हुआ है ना, कोई डिसऑनेस्ट किया आपने, जानबूझ के डिसाइड किया कि ये बताना नहीं है उसको, तो वो सिचुएशन में बैन लगाना ठीक है। अगर कोई आदमी ने सिर्फ मिस्टेक की है तो मिस्टेक में तो उसको बैन नहीं लगाना चाहिए। मगर इसके बारे में अगर आप उसके जो डिसीजन है 10 ईयर का बैन, अगर आप उसके साथ अग्री नहीं करते तो फिर उसको चैलेंज करना पड़ेगा, सब बताना पड़ेगा कि लोग ये हुआ था, स्टेटमेंट बनाकर भेजना पड़ेगा, ये गलती थी, ये हुआ था। अगर फिर भी वो ना माने तो आप उसको जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं, मगर कोई किसी वकील के साथ बात करना चाहिए वो जुडिशियल रिव्यू करने से पहले, बिकॉज वो थोड़ा सा काम इट्स क्वाइट कॉम्प्लेक्स और स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स है, तभी करना चाहिए। मगर अब बेस्ट किया है कि जो भी हुआ है कोई वकील को बताया कि लोग ये हुआ है, अगर हम उसको एक्सप्लेन करें कि ये काम होगा या नहीं, अगर वो कहेगा कि नहीं लोग उसका जो डिसीजन है वो 10 ईयर का बैन ही लगाएंगे, कोर्ट में जाएंगे तब भी आपका कुछ काम नहीं होगा, तो देयर इज़ नो पॉइंट आप पैसे वेस्ट करेंगे इसमें, बिकॉज वो 1300 पाउंड की जो फी है वो ले लेंगे आपसे। अच्छा, तो अगर वकील कहता है कि मैं दोबारा से उसी एप्लीकेशन को रिन्यू करवाते हैं तो वो कर सकते हैं? जी कर सकते हैं ना, वो रिन्यू नहीं कर सकते, वो नया एप्लीकेशन डालना पड़ता है इसमें, रिव्यू नहीं कर सकते। उसमें डिसीजन कब आया था? सॉरी, डिसीजन कब आया था? डिसीजन आए थे 4 मंथ पहले। तो कर सकेंगे, उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है, अगर इतना पुराना भी नहीं है आप। आई थिंक इसमें एक फ़ी होती है, 80 पाउंड्स की फ़ी होती है, तो वो पे करके आप उसको बता सकते हैं कि लोग ये हुआ है, मगर आपको स्टेटमेंट सब कुछ भेजना पड़ेगा।
प्रॉब्लम क्या है कि ये होम ऑफिस वाले जनरली उसका माइंड चेंज नहीं करते. जब वो कह देते हैं ना कि वी आर सेटिस्फाइड, ये आपने कुछ गलत बात बताया है, जनरली वो माइंड चेंज नहीं करते. मगर आप कर सकते हैं, बिल्कुल वकील की बात राइट है, आप रिव्यू करा सकते हैं उसकी फ़ी पे करके. मे बी अगर 80 पाउंड की सिर्फ फ़ी है तो देयर इज़ नथिंग टू लूज. 80 पाउंड्स तो इट्स नॉट दैट बैड. अब 80 पाउंड्स दे दो, एक बार ट्राई कर लो, अगर वो माइंड चेंज करते हैं तो. जी ठीक है. ठीक है ना, क्योंकि ये एक फैमिली मैटर है ना, वही तो कह रही ना फैमिली. हाँ मगर जी, मगर वो सब आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि लोग ये क्वेश्चन था, दिस इज़ द रीज़न, मैंने बताया नहीं, मैंने ये सोचा कि ये रेलेवेंट नहीं है, ये तो कोई सीरियस बात, कोई क्रिमिनल की बात है, मुझको नहीं पता था कि ये कोई रेलेवेंस था, इसलिए मैंने नहीं बताया, मैंने खुद किया था, कोई एडवाइस नहीं लिया था. ये सब एक्सप्लेन करना पड़ेगा उसको एक स्टेटमेंट बनाकर. इट्स वर्थ अ ट्राई. जी उधर बस वो पूछ रहे थे कि ये क्रिमिनल ऑफेंस है या कोई है आपकी लाइफ में, तो वो बताएं. तो उसकी हमें टिक मार नो ही करनी थी ना, क्योंकि क्रिमिनल ऑफेंस नहीं कुछ भी नहीं. तो वो जो प्रॉब्लम था वो क्या था? तो वो थोड़ी घर का ही मसला बना, घर पे ही मसला था. चलो ठीक है, हो सकता है आप फ़ोन पे तो ऑब्वियसली ये ओपनली बात नहीं कर सकते, मगर ये वकील आपका जो लॉयर है अगर उसको लगता है कि चांसेस है इसमें हम कोई आर्ग्यूमेंट बनाकर भेज सकते हैं, तो फिर डेफिनेटली आप ट्राई कर लो. इट्स वर्थ अ ट्राई डेफिनेटली. थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच है आपका कॉल का जी, थैंक यू वेरी मच. So just going back to what we were discussing about European dependent applications, as I was saying, there are two categories of cases where someone wants to apply as the partner of a European national in the United Kingdom. One is where they are legally married, which is the easier case to do, and the other, which is increasingly common, where somebody is in a relationship. And by that we mean even somebody who is Islamically married to a European national. Because they are not legally married, obviously it's not classed as an application based on a marriage. It's classed as an application based on a relationship between the parties. Now, as far as that's concerned, there are two difficulties. One is that the parties need to be in a relationship for 2 years before they can apply. Obviously different to somebody who's in who's actually married legally, because they can apply straight away. If they are not legally married, they need to be in a durable relationship, in a committed relationship for approximately 2 years before they can apply. Now, the second problem with that category is that if the Home Office refuses the application, it does cause certain difficulties. Let me take the next call and I'll come back to this topic. Hello, Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम जी. जी मेरा नाम फैसल है. जी फैसल भाई जी. मैं यहाँ पर विजिट पे आया था जी. और मैंने जो है यहाँ पर केस भी अप्लाई किया था, जो कि इन्होंने मेरा रिफ्यूज कर दिया था 2014 में. और फिर मैं उसके बाद यहाँ से आयरलैंड गया था. आयरलैंड में मैंने केस अप्लाई किया था जी. तो मैं अभी यहाँ आया हूँ, ना मेरा वहाँ पर कोई है कुछ है और ना यहाँ कुछ है. तो अभी मेरे ये ना एक शादी में करना चाहता हूँ यहाँ पर जी. तो मैं उसमें आपसे राय चाहूँगा कि क्या मेरे लिए कुछ बेहतरी है इस मामलात में. और डेफिनेटली इन प्रिंसिपल तो ऑब्वियसली आपके लिए बेहतरी है शादी में. एक दो चीज़ मुझको चेक करने दो. आपकी वाइफ वो ब्रिटिश सिटीज़न है, यूरोपियन सिटीज़न है? नहीं, वो एज अ स्टूडेंट है. स्टूडेंट है, ऑलराइट, ओके. और वो किस कंट्री से आई है? वो पाकिस्तान से आई है, राइट, ठीक है. और उसका कोई हो सकता है कि उसका खुद का कोई इंडेफिनिट स्टे होगा यूके में, वो पॉसिबिलिटी है या नहीं है? उसका तो मैंने पता नहीं किया, लेकिन वो अभी आई है स्टडी पे. आई अंडरस्टैंड. असल में नॉर्मली क्या होता है कि अगर कोई यहाँ स्टडी करने के लिए जब वो यूके में आते हैं तो हो सकता है कि वो उसका जो हस्बैंड है वो डिपेंडेंट पे उसको यूके में वो उसको वीज़ा मिल सकती है. मगर आपका प्रॉब्लम क्या है कि आप तो ऑब्वियसली ओवरस्टे है यूके में, सो आपको वो स्टूडेंट डिपेंडेंट पे आपको वीज़ा नहीं देंगे आपको यूके में. सो इमीडिएटली जो आपको एडवांटेज मिल सकती है वो इस केस में नहीं मिलेंगे. अगर वाइफ पोटेंशियल वाइफ है, इफ़ शी वाज ब्रिटिश, या तो शी हैड अ यूरोपियन पासपोर्ट,
या शी हैड इंडेफिनिट लीव, तो इसमें थोड़ा सा आपका केस ईजी होता, उसमें वी कुड हैव डन समथिंग इन द लॉन्ग रन। बट बिकॉज आपका वाइफ के पास वो नहीं है, यहाँ सिर्फ स्टूडेंट स्टेटस है, सो इमीडिएटली आपके लिए कोई रास्ता नहीं निकल सकता आपके लिए, आप उसका डिपेंडेंट पे भी अप्लाई नहीं कर सकते यूके में। लेट्स से लॉन्ग रन, बहुत ये तो लॉन्ग रन की बात है कि अगर आपकी शादी हो जाए, शादी से कोई बच्चा हो जाए और बच्चा की फॉर एज उसकी 7 years हो जाए, तो वो टाइम में आप कुछ कर सकते हैं। या तो वाइफ आपकी शादी हो जाए और ये जो अभी यहाँ है ऑन अ स्टूडेंट वीज़ा, उसका फिर कोई बाद में वर्क परमिट कुछ हो जाए और इंडेफिनिट हो जाए उसका यूके में, और फिर बच्चे के बेस पे इवन आफ्टर दैट कुछ कर सकते हैं। मगर एट द मोमेंट बिकॉज उसकी कैटेगरी ब्रिटिश, यूरोपियन या सेटल्ड नहीं है, एट द मोमेंट कुछ करना मुश्किल है। इट रियली डिपेंड्स, अगर लॉन्ग रन में कोई आपका सर्कमस्टांसेस चेंज होता है तो कुछ कर सकते हैं। एज आई सेड कि इफ देयर इज अ बेबी एंड द बेबी रिजाइड्स इन द यूके फॉर 7 years, या तो उसका कोई इंडेफिनिट हो जाए, तो इन लेटर ऑन फिर कुछ कर सकते हैं। मगर एट द मोमेंट जो नॉर्मल केसेस में हम कुछ कर सकते हैं वो नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ योर पोटेंशियल पार्टनर स्टेटस एट द मोमेंट। तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई लेगेसी स्कीम कोई आए जिसमें कुछ इजी हो जाए? इसी असल में प्रॉब्लम क्या है लेगेसी स्कीम में कि एट द मोमेंट कोई स्कीम नहीं है, एट द मोमेंट देयर इज नथिंग एट ऑल ऑन द होराइजन, बिल्कुल नहीं है। और ये जो करंट गवर्नमेंट, करंट होम ऑफिस में जो अप्रोच है विच इज़ क्वाइट स्ट्रिक्ट, बिल्कुल कोई फ्लेक्सिबिलिटी ही नहीं है। एट द मोमेंट ऐसा नहीं लगता कि कोई लेगेसी टाइप कोई स्कीम आएगी। ऑब्वियसली इसमें यह है कि व्हेन अ गवर्नमेंट चेंजेस, sometimes when the government changes, so policy decisions are made which results in different rules being introduced. So at that stage there's always a possibility that there may be some type of legacy scheme reintroduced. But at the moment, with the current government, with the current approach to immigration, there is nothing at the moment. आपको पता होगा, मैं सुना होगा, you know, when they talk about the Home Office, they want to create a hostile environment for people in the United Kingdom. उसका यही है ना कि make it as difficult as possible for people who are in the UK as migrants, whether overstayers or not. And you know, forget legacy scheme. You know, the problem that they're creating, you would have seen with the Windrush generation जो कहते हैं, the people that came from the Caribbeans in the 1960s, and the problems that they faced in the United Kingdom, people who'd lived here for 30, 40 years. It's because of this general approach of the Home Office can make it as difficult as possible, really, for people in the UK. So at the moment, I can't see कि कोई legacy scheme आएगी, कुछ होगा at the moment. So a lot depends. अगर आप आगे जाकर शादी करें with this lady who's here as a student, a lot depends on what will happen in the future. Future की बात है ना, either on the basis of the child, on the basis of any indefinite leave she gets, on the basis of any policy changes in the future. But immediately there isn't a solution at the moment. At the moment there's no solution, unfortunately. Okay. I hope that answers that question. So before I return to my topic, which touched upon a lot of the issues which are in the news at the moment with the Windrush generation, the people who came here on the ship that was known as Windrush. Now, the problem with that generation is that a lot of people didn't get confirmation of their right to stay here at that stage. They didn't get British passports. And then now, when they've tried to apply for confirmation of their rights to stay here, they've run into difficulties with the Home Office saying, we've got no records, you prove your status. So, you know, we'll look at that in greater detail after we've taken a short break.